Hello students, in this video I Abhay Kumar going to solve problems 14 to 18 of chapter 26 Laws of Thermodynamics of the book Concepts of Physics Part 2 written by Dr. Verma for class 11 Physics, IIT JEE, NEET and other plus 2 level entrances. Problem number 14 is the internal energy of a gas is given by capital U equals to 1.5 PV. It expands from 100 cm³ to 200 cm³ against a constant pressure of 1.0 into 10 to the power 5 Pascal. Calculate the heat absorbed by the gas in the process. किसी गैस की इंटरनल एनर्जी को एक्सप्रेस किया गया है कैपिटल यू, जो कि इंटरनल एनर्जी का सिंबल है. तो यू इज इक्वल टू 1.5 प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम V. गैस कांस्टेंट प्रेशर 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के अगेंस्ट विरुद्ध 100 cm³ से वॉल्यूम गैस का 200 cm³ चेंज होता है, दैट इज इंक्रीज होता है. तो गैस के द्वारा इस प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा उसे कैलकुलेट करना है, उसे फाइंड करना है. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इट इज गिवन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज गिवन बाय द रिलेशन capital U equals to 1.5 P into V. Therefore, change in internal energy delta U at constant pressure P is 1.5 P multiplied by delta V. Change in volume of the gas or increase in volume of the gas is from 100 cm³. Initial volume of the gas is 100 cm³ and final volume of the gas is 200 cm³. गैस का इनिशियल वॉल्यूम 100 cm³ से फाइनल वॉल्यूम V2 200 cm³. कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर का वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल है. तो इस कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट गैस एक्सपेंड होकर के गैस का वॉल्यूम 100 cm³ से 200 cm³ हो जाता है. इसलिए डेल्टा V दैट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डेल्टा U इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. फ्रॉम दिस रिलेशन U इज इक्वल टू 1.5 PV. इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डेल्टा U इक्वल्स टू 1.5 प्रेशर इज कांस्टेंट P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V. डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम और इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस. तो डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम minus initial volume, final volume V2 minus initial volume V1, final volume is 200 cm³. So it is 200 multiplied by 10 to the power cm³. 1 cm³ is 10 to the power minus 6 meter³. So it is 200 into 10 to the power minus 6 meter³ minus 100 multiplied by 10 to the power minus 6 meter³. That is 200 minus 100, 10 to the power minus 6 कॉमन हो जाएगा. That is 100 into 10 to the power minus 6 meter³. And it is 10 to the power 100 multiplied by 10 to the power minus 6. That is 10 square multiplied by 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 4 meter³. And it is increase in volume of the gas. यह गैस का वॉल्यूम में इंक्रीज है डेल्टा V 100 cm³ से 200 cm³. सो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, फाइनल वॉल्यूम 200 cm³ माइनस इनिशियल वॉल्यूम 100 cm³. दैट इज 100 cm³ मीन्स 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6 meter³. Pressure is given, constant pressure P is given. It is
1.0 multiplied by 10 to the power 5 Newton per meter square. Now we have to calculate heat absorbed by the gas in this process. गैस द्वारा कितना हीट एब्जॉर्ब किया गया उसे फाइंड करना है, उसे कैलकुलेट करना है. So using first law of thermodynamics, delta Q equals to delta U plus delta W. So we have delta Q equals to delta U. Delta U is the increase in internal energy of the system, and it is given by delta U is equal to 1.5 P into delta V, because internal energy of the system is given, capital U is equal to 1.5 PV, say it is equation number 1, and delta U is equal to increase in internal energy or change in internal energy of the system is equal to 1.5 P, since P is constant, multiplied by del V, delta V. Suppose it is equation number 2. So heat absorbed by the system is delta Q is equal to delta U plus delta W, and in place of delta W we can write pressure multiplied by increase in volume delta V. Work done by the system, work done by the gas is, we know that work done by the gas has constant pressure. P is given by P multiplied by delta V. Pressure multiplied by increase in volume. Work done by the gas by the system होता है formula. So delta Q equals to delta U is 1.5 P into delta V, 1.5 P into delta V plus P into delta V. Pressure is 1 into 10 to the power 5 multiplied by change in volume or increase in volume of the gas, which is 100 into 10 to the power minus 6 meter cube, that is 10 to the power minus 4 meter cube. So it is 10 to the power minus 4, and delta Q equals to 1.5 multiplied by pressure is 1 into 10 to the power 5 in the first term, putting the value of pressure in the first term 1 into 10 to the power 5, and increase in volume is 10 to the power minus 4 meter cube, plus in the second term 10 to the power 5 multiplied by 10 to the power minus 4, that is 10 to the power 1, that is 10, and in the first term it is 1.5 multiplied by 10 to the power 5 multiplied by 10 to the power minus 4 is also 10. So 1.5 into 10 plus 10, that is 1.5 multiplied by 10 is 15. 15 plus 10, it is 15 plus 10. So heat absorbed by the gas in this process is delta Q equals to 15 plus 10, that is 25 जूल. आंसर. तो इस प्रॉब्लम में गैस के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया हीट 25 जूल होगा, जो इस प्रॉब्लम का आंसर है. नाउ वी हैव टू सॉल्व the next problem, which is problem number 15. A gas is enclosed in a cylindrical vessel fitted with a frictionless piston. The gas is slowly heated for some time. During the process, 10 joule of heat is supplied and the piston is found to move out 10 cm. Find the increase in the internal energy of the gas. Find the increase in the internal energy of the gas. We have to calculate increase in internal energy of the gas. The area of cross section of the cylinder is equal to 4 cm square and the atmospheric pressure P equals to 100 किलो पास्कल. एक गैस है जो कि एक सिलिंड्रिकल वेसल में, बेलनाकार बर्तन में, जिसमें कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है उस सिलिंड्रिकल वेसल में, तो उसमें गैस रखी गई है, इंक्लूडेड है, और गैस को धीरे धीरे कुछ समय तक गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, और इस प्रोसेस में 10 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, दैट इज इट इज गिवन हीट सप्लाइड टू द गैस डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 10 जूल. तो गैस को सिलिंड्रिकल वेसल में स्लोली धीरे धीरे कुछ समय तक गर्म किया जाता है, एंड इस प्रोसेस में 10 जूल हीट सप्लाई किया जाता है सिस्टम को, गैस को, एंड जिससे कि गैस एक्सपेंड होकर के 10 सेंटीमीटर बाहर की ओर मूव करता है, दैट इज डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स इज द
movement of or displacement of the piston, which is delta x is equal to 10 cm, that is 10 upon 100 meter, that is 0.1 मीटर. तो गैस को गर्म करने से कुछ समय तक धीरे धीरे गर्म करने से गैस एक्सपेंड करता है और इस प्रोसेस में 10 जूल हीट सप्लाई किया जाता है गैस को, जिससे कि पिस्टन बाहर की ओर मूव आउट होता है, 10 सेंटीमीटर से मूव कर जाता है बाहर की ओर. तो वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. तो गैस के इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ उसे कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है. डेल्टा यू, अगेन वी हैव टू इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड increase in internal energy of the gas. So delta U is equal to what? Delta U increase in internal energy जो हमें कैलकुलेट करना है. प्रेशर, area of cross section of the cylinder, area of cross section of the cylinder, capital A, say capital A is 4 cm square, that is 4 multiplied by 10 to the power 1 cm square is 10 to the power minus 4 meter square. And the atmospheric pressure is 100 kilopascal. Atmospheric pressure P is equals to 100 kilopascal. That is 100 multiplied by 10 to the power 3 pascal. So using first law of thermodynamics, we have first law of thermodynamics, that is delta Q is equal to delta U plus delta W. Increase in internal energy of the gas is given by delta U equals to delta Q minus delta W. Since delta Q is equal to delta U plus delta W, therefore increase in internal energy of the gas का इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से. डेल्टा क्यू इज गिवन, डेल्टा क्यू इज 10 जूल एंड डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स एंड एरिया इनटू डेल्टा एक्स इज इंक्रीज इन वॉल्यूम. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 4 cm square, that is 4 into 10 to the power minus 4 meter square. So delta Q is heat supply to the gas is 10 joule, which is given in the problem, minus delta W equals to pressure multiplied by, that is force multiplied by displacement, and force is pressure multiplied by area into delta x. This is work done. So pressure multiplied by area multiplied by delta x, it is delta W. So delta U, hence delta U equals to 10 joule minus pressure is 100 kilopascal, so it is 100 multiplied by 10 to the power 3 multiplied by area of the piston is 4 cm square, that is 4 into 10 to the power minus 4 meter square, so it is 4 into 10 to the power minus 4 multiplied by delta x, that is movement of the piston. Piston is moved out through distance 10 cm. पिस्टन सिलिकॉन वेसल का पिस्टन 10 सेंटीमीटर बाहर की ओर मूव कर जाता है गैस के एक्सपेंड होने के बाद, जब 10 जूल हीट गैस को सप्लाई किया जाता है. सो डेल्टा एक्स इज 0.1 मीटर, सो इट इज 0.1 मीटर एंड इट इज 10 एंड 10 टू पावर 3 सेकेंड टर्म में 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3. यह प्रेशर है, किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट किया गया. 100 किलो पास्कल इज 100 इंटू 10 टू पावर 3 पास्कल मल्टीप्लाइड बाई एरिया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ that is distance covered by or displacement of the piston or distance covered by the piston is 10 cm, that is 0.1 meter.
10 by 100 that is 0.1 meter. So it is 10 to power 3 से 10 to power minus 4 का -3 पावर न्यूट्रलाइज होकर के 10 to power -1 बचेगा और फिर -1 और 0.1 दैट इज 1 इंटू 10 to power -2, उससे 100 का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा. इस प्रकार we left with only 10 minus second term में केवल 4. We left with 4 in second term, so it is 10 minus 4. Therefore, it is 6. Therefore, increase in internal energy of the system is 6 joule. Answer. Note it. Now problem 16. A gas is initially at a pressure of 100 kilopascal and its volume is 2.0 meter cube. Its pressure is kept constant and the volume is changed from 2.0 meter cube to 2.5 meter cube. Its volume is now kept constant and the pressure is increased from 100 kilopascal, that is 100 kPa, to 200 kPa. The gas is brought back to its initial state. The pressure varying linearly with its volume. Part A, whether the heat is supplied to the gas or extracted from the gas in the complete cycle. And part B, how much heat was supplied or extracted in the complete cycle. From the given data in this problem, we can plot PV diagram for the cyclic process, in which pressure is taken along y-axis in kilopascal, that is in kPa, while volume of the gas is taken along x-axis and it is in meter cube. Initial pressure गैस का 100 किलोपास्कल है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल वॉल्यूम गैस का 2.0 मीटर क्यूब है. तो हम लोग एक पॉइंट सपोज किया जाए, पॉइंट ए ऑब्टेन कर सकते हैं 100 किलोपास्कल एंड प्रेशर एंड 2.0 मीटर क्यूब वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग. Now according to this problem, गैस का इनिशियल प्रेशर 100 किलोपास्कल है एंड इनिशियल वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है. इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. अब प्रेशर को 100 किलोपास्कल ही रखा जाता है एंड वॉल्यूम को 2 मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब से 2.5 मीटर तक इंक्रीज किया जाता है, जिसे हम एपी पाथ के लॉन्ग एक्सप्रेस कर सकते हैं. इस इंक्रीज इन वॉल्यूम गैस का 2.0 मीटर क्यूब से 2.5 मीटर क्यूब को पाथ एबी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसे किया जा सकता है रिप्रेजेंट पीवी डायग्राम में. प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में एबी लाइन से और एबी पाथ से रिप्रेजेंट किया गया. 100 किलो पास्कल पर गैस का वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब से बढ़कर इंक्रीज होकर 2.5 मीटर क्यूब हो गया. अब गैस का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर प्रेशर को, दैट इज 2.5 मीटर क्यूब बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है गैस का. अब इस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर प्रेशर को 100 किलो पास्कल से 200 किलो पास्कल तक इंक्रीज किया जाता है. एंड सपोज the new point is C, where the pressure of the gas corresponding to pressure 200 kilopascal, the corresponding point is C. 200 kilopascal के corresponding new point C है, जहां पर कि कांस्टेंट वॉल्यूम 2.5 मीटर क्यूब पर गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया है 100 किलोपास्कल से 200 किलोपास्कल. अब इसे हम नाउ इट कैन बी दिस चेंज in pressure at constant volume can be expressed by path BC, and
फाइनली द गैस इज ब्राउट बैक टू द इनिशियल स्टेट। अब गैस को इनिशियल स्टेट ए में वापस लाया जाता है पॉइंट सी से, एंड इस पाथ में यह पाथ ऐसा होगा जो कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम लिनियरली वैरी करेगा, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। सो CA, this path is represented by CA, in which there is linearity between pressure and volume, that is pressure is directly proportional to volume. So it is a straight line, and the direction of this closed path, that is ABCA, that is a cyclic process, is anti-clockwise. So work done in this complete cycle will be negative. ABCA, direction of this path is anti-clockwise, so work done in one complete cycle is negative. तो पार्ट ए में हम लोगों को आंसर देना है कि whether the heat is supplied to or extracted from the gas in the complete cycle. इस complete cycle में, that is ABCA में, गैस को हीट सप्लाई किया जाता है, दिया जाता है बाहर से, या गैस से ही हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गैस से हीट को लिया जाता है, निकाला जाता है। एंड पार्ट बी में है हाउ मच हीट वाज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड इन दिस कंप्लीट साइकिल। तो सेकेंड पार्ट में क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ हीट मालूम करना है कि हीट का कितना मैग्नीट्यूड, कितना क्वांटिटी को सप्लाई किया गया या एक्सट्रैक्ट किया गया, मतलब सिस्टम को दिया गया, गैस को दिया गया हीट, या हीट को गैस से लिया गया। तो यदि अमाउंट ऑफ हीट का साइन, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट को तो हम लोग जूल में एक्सप्रेस करेंगे, कैलोरी में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एसआई यूनिट प्रेशर एंड वॉल्यूम का भी एसआई यूनिट ही है, तो जूल में आएगा। लेकिन अगर हीट का साइन अगर निगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, हीट को गैस से लिया गया, निकाला गया। जबकि अगर हीट का, दैट इज डेल्टा क्यू, हीट अगर का साइन पॉजिटिव हुआ तो उस सिचुएशन में हीट इज सप्लाई टू द गैस। तो पार्ट बी का अगर आंसर हम, अगर हीट का साइन अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो उससे यह पता चल जाएगा कि हीट सिस्टम को दिया गया या सप्लाई किया गया या एक्सट्रैक्ट किया गया। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी, यूजिंग first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. Since the process is cyclic, therefore initial state and final state is the same. So change in internal energy of the system is zero. क्योंकि cyclic process में initial state and final state एक ही पॉइंट पर होता है, क्योंकि गैस ए बी पाथ के लॉन्ग जाकर फिर ए से बी, फिर बी से सी, एंड फिर सी से रिटर्न हो गया है ए पॉइंट पर, इसलिए इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर गया पॉइंट ए पर, तो इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो होगा। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई किया जाए तो डेल्टा क्यू, जो अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वह सीधे वर्क के रूप में यूटिलाइज होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। सो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू in the cyclic process, since change in internal energy of the system delta U is equal to 0, and in the cyclic process work done in one complete cycle ABCA is area under PV diagram, that is area of triangle ABC. So delta Q amount of heat is equal to area, work done is equal to area of under PV diagram, that is area of triangle ABC formed, that is area of triangle ABC, that is 1 by 2 multiplied by base AB, which represents change in volume. AB represents, AB is parallel to the volume axis, so it represents change in volume, multiplied by height of the triangle is BC, which is parallel to pressure axis. So it BC represents height of this triangle, ABC represents change in pressure, so it is BC. Area of triangle ABC is half AB into BC is equal to half 1 by 2 multiplied by AB. AB is change in volume, that is 2.5 meter minus 2 meter, that is 0.5.
0.5 मीटर क्यूब। 2 पॉइंट वॉल्यूम, ए पॉइंट से जब कांस्टेंट प्रेशर 100 किलो पास्कल पर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होकर के बी पॉइंट पर जब पहुंचता है तो 2.5 मीटर क्यूब न्यू वॉल्यूम गैस का होता है। तो गैस के वॉल्यूम में चेंज कितना हो गया? 2.5 माइनस 2 दैट इज 0.5 मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई बीसी। बीसी चूंकि प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है तो प्रेशर में चेंज को और नेट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो बीसी इक्वल टू 200 किलो पास्कल माइनस 100 पास्कल दैट इज 100 किलो पास्कल। So it is 100 multiplied by 10 to the power 3. And since the direction of this closed loop or path is anti-clockwise, so this work done is negative. So it is minus 1 by 2 multiplied by 0.5 multiplied by 100 into 10 to power 3. And 100 cancel हो गया 2 से, that is 50 equals to 50 का एक 0.5 के डिसिमल से न्यूट्रलाइज हो गया, कैंसिल हो गया। सो इट इज 5 into 5 5 into 5 that is 25 into 10 to the power 3 that is 25,000 with negative sign। so delta Q equals to minus 25 into 10 to the power 3 joule or minus 25,000 joule। The sign of heat is delta Q is negative, so it is clear that heat is extracted from the gas। heat का total heat net heat in one complete cycle in the cyclic process ABCA total heat जो इस complete cycle में है वह negative है। इसका मतलब है कि heat is extracted from the system, extracted from the gas, गैस से heat निकाली गई है, ली गई है। so answer of part A is also that is delta Q is minus 25,000 joule, that is how much heat was supplied or extracted, that is heat is extracted, heat was extracted। तो यह पार्ट बी का आंसर हो गया और पार्ट बी के आंसर से पार्ट ए का आंसर भी हो गया कि whether the heat is supplied or extracted from the system complete cycle। so heat is extracted from the system in the complete cycle। अल्टरनेटली इस प्रॉब्लम को इस पाथ के लॉन्ग दैट इज एबी के लॉन्ग, बीसी के लॉन्ग एंड सीए के लॉन्ग सेपरेटली वर्क डन कैलकुलेट कर नेट वर्क डन ऑल 3 पार्ट्स दैट इज के लॉन्ग वर्क डन को ऐड कर भी ऑब्टेन किया जा सकता है। तो वर्क डन अलोंग पाथ एबी इज एट कांस्टेंट प्रेशर 100 किलो पास्कल इज प्रेशर 100 into 10 to power 3 Pascal multiplied by change in volume, final volume 2.5 minus original volume 2.0, that is 100 into 10 to power 3 multiplied by 0.5। तो यह वर्क डन अलोंग होगा AB के लॉन्ग। BC के लॉन्ग वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम 2.5 मीटर क्यूब पर गैस का प्रेशर 100 किलो पास्कल से 200 किलो पास्कल चेंज करता है। तो यहाँ चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो BC पार्ट के लॉन्ग जो वर्क डन होगा दैट इज BC पाथ के लॉन्ग वर्क डन 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट है 2.5 मीटर क्यूब पर, तो इसलिए प्रेशर में तो चेंज हो रहा है 100 किलो पास्कल से 200 किलो पास्कल, तो वर्क डन BC पाथ के लॉन्ग 0 होगा। सो अल्टरनेटली सेकेंड मेथड का यूज करें तो अमाउंट ऑफ हीट जो होगा यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में फिर 0 है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू टोटल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू होगा इन वन कंप्लीट साइकिल एंड इट इज डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। डब्ल्यू ए बी इज यूजिंग द फॉर्मूला work done at constant pressure P is P multiplied by delta V, pressure multiplied by change in volume। Pressure is 100 kilopascal for path AB, 100 kilopascal is 100 into 10 to power 3 Pascal multiplied by change in volume from A to B is 2.5 minus 2 that is 0.5 meter cube
प्लस WBC, BC पाथ के लॉन्ग कांस्टेंट वॉल्यूम 2.5 मीटर क्यूब पर जो वर्क डन होगा वह आइसोकोरिक प्रोसेस है, वह जीरो होगा सिंस चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो. सो WBC, BC पार्ट के लॉन्ग और BC पाथ के लॉन्ग वर्क डन जीरो होगा. एंड CA पाथ के लॉन्ग जो वर्क डन होगा C से A तक, C के कॉरस्पॉन्डिंग, C पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है 200 किलो पास्कल, जबकि B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है 100 किलो पास्कल. तो प्रेशर के टू वैल्यूज हैं, तो दोनों का एवरेज ले लेना होगा. एंड वॉल्यूम यहाँ पर C से A तक, A के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, C के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 2.5 मीटर क्यूब है PV डायग्राम में जो हमने प्लॉट किया है गिवन डाटा से. तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है 2.5 से 2 मीटर क्यूब. सो वर्क डन यहाँ निगेटिव होगा. सो एंड प्रेशर इज एवरेज प्रेशर 200 किलो पास्कल प्लस 100 किलो पास्कल by 2, that is 300 upon 2, that is 150. WCA is average pressure 150 multiplied by 10 to the power 3 पास्कल. 150 किलो पास्कल हो जाएगा, 200 किलो पास्कल एंड 100 किलो पास्कल का एवरेज प्रेशर, दैट इज 150 इंटू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई जो चेंज इन वॉल्यूम है. अब चूंकि C से A तक सिस्टम जो है गैस C से इनिशियल स्टेट ए पॉइंट पर इनिशियल स्टेट में रिटर्न हो जाती है गैस, तो इसलिए जो गैस का वॉल्यूम है वह डिक्रीज करता है, फॉल करता है 2.5 से मीटर क्यूब से 2.0 मीटर क्यूब. सो यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम होगा 2 मीटर क्यूब माइनस 2.5 मीटर क्यूब, दैट इज माइनस 0.5. नाउ वर्क डन अलोंग पाथ AB इज पॉजिटिव, इट इज 0.5 से 100 का एक जीरो, 0.5 के डिसमल से, दैट इज डिसमल से 100 का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज 5 इंटू 10 टू पावर 4, 5 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट इज 50,000 जूल. प्लस माइनस सेकेंड टर्म तो WBC जीरो है, वर्क डन अलोंग पाथ BC इज जीरो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो इट इज प्लस माइनस. एंड 150 का जीरो से 0.5 का डिसमल भी कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया. Now it is 15 into 5, that is 75, multiplied by 10 to power 3, that is 75,000, minus 75,000 वर्क डन along CA के along वर्क डन है. तो वर्क डन निगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, इसलिए टोटल वर्क डन भी कंप्लीट साइकिल में निगेटिव होगा. सो अमाउंट ऑफ इट विल बी ऑल्सो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W इन द साइक्लिक प्रोसेस. सिंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम का जीरो होता है, इसलिए जो अमाउंट ऑफ हिट होगा वो सीधे वर्क डन के रूप में यूटिलाइज होता है. सो इट इज 5 इंटू 10 टू पावर 4 और 50 इंटू 10 टू पावर 3 भी लिखा जा सकता है. सो इट इज 50,000, 50 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस 75 इंटू 10 टू पावर 3, 75,000 जूल. सो इट इज 50 माइनस 75, 10 टू पावर 3 तो कॉमन हो जाएगा, दैट इज माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 जूल, दैट इज माइनस 25,000 जूल डेल्टा Q. सो साइन ऑफ डेल्टा Q इज नेगेटिव, सो हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम. हीट अब सिस्टम को सप्लाई नहीं किया जाएगा, बल्कि सिस्टम से अगर Q का वैल्यू, डेल्टा Q का वैल्यू, नेट हीट का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता तो सिस्टम को हीट सप्लाई किया जाता, लेकिन यहाँ सिस्टम से गैस से हीट लिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि डेल्टा Q दैट इज नेट हीट इन वन कंप्लीट साइकिल वह निगेटिव है, इसलिए हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. तो अल्टरनेट मेथड से भी इसे सॉल्व किया गया. वैसे इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए एरिया साइक्लिक प्रोसेस में एरिया अंडर PV डायग्राम के हेल्प से प्रॉब्लम इमीडिएटली तुरंत ही सॉल्व हो जाता है, इसलिए एरिया अंडर PV डायग्राम के हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होगा पॉइंट ऑफ टाइम को देखते हुए. Now problem 17. Consider the cyclic process ABCA as shown in figure 26E9 in temperature volume diagram, that is TV diagram, performed on a sample of 2.0 mole of an ideal gas. A total of 1200 joule of heat is withdrawn from the sample, that is gas,
in the process, that is in the cyclic process ABCA. Find the work done by the gas during the part BC. फिगर 26E9 में टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है, वाई एक्सिस के लॉन्ग टेम्परेचर एंड जिसे केल्विन में रिप्रेजेंट किया गया है टेम्परेचर को, जबकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम है। तो इस फिगर में एक साइक्लिक प्रोसेस ABCA जिसे परफॉर्म किया जाता है 2 मोल आइडियल गैस सैंपल पर एंड कुल टोटल 1200 जूल हीट उस गैस सैंपल से विड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है। तो गैस के द्वारा इस क्लोज पाथ दैट इज साइक्लिक प्रोसेस के BC पार्ट में टोटल वर्क डन बाय द गैस को कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। It is given delta Q, that is heat which is heat is withdrawn from the sample is delta Q is minus 1200 जूल। क्योंकि गैस सैंपल से हीट को विड्रॉन किया जाता है, निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, इसलिए जो अमाउंट ऑफ हीट है वह निगेटिव होगा, उसे निगेटिव लिया है, सपोर्ट किया जाता है। And number of moles of the gas is N is equal to 2 mole, 2.0 mole, that is 2 moles. And we have to calculate work done along the curve part BC of this cycle, that is ABCA, that is cyclic process, in the cyclic process. So we have to calculate WBC, work done along BC, work done by the gas along path BC is note of interrogation. Since the process is cyclic, so change in internal energy of the system is 0. So delta U बराबर 0 in the cyclic process. So work done by the gas during part BC. Using first law of thermodynamics, we have delta Q equals to delta U plus delta W. Here delta U is 0, delta Q is heat taken from the heat withdrawn or taken from the gas sample is minus 1200 joule, so it is minus 1200। delta Q के जगह minus 1200 joule पुट किया गया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W का यूज किया गया, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है ABCA, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 होता है, इसलिए कि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर होता है, दोनों कोइंसाइड करता है पॉइंट A पर। सो डेल्टा U इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा W टोटल वर्क डन in the complete total work done in the during the cyclic process ABCA, that is delta W is work done along path AB plus work done along path BC, जिसे हमें कैलकुलेट करना है, प्लस वर्क डन along path CA और minus 1200 equals to delta WAB. AB part is linear in which temperature is directly proportional to volume. So if T varies as V, then the ratio of T by V is equal to constant, and T by V, in place of T by V we can write P upon NR from the ideal gas equation, PV is equal to nRT. So in place of T by V we can write P upon N. N is the number of moles of the gas, N and R is capital R is gas constant. So T by V is equal to constant in the linear region AB. AB part जो है वह linearity को शो करता है, that is temperature is directly proportional to
वॉल्यूम, इसलिए जो कि एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो टी बाई भी इसमें कांस्टेंट होगा, टी वेरिजेज भी, देयरफॉर इन प्लेस ऑफ टी बाई भी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन राइट पी बाई एन आर, सिंस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, देयरफॉर टी बाई भी इज इक्वल टू पी अपॉन एन आर इज ऑल्सो कांस्टेंट, and hence since n and r both are constant, number of moles of the gas भी constant है, 2 mole gas है, and r का वैल्यू भी constant होता है, इसके प्रेशर भी constant होगा, so it is प्रेशर constant है, so it is an so part AB और path AB is the isobaric process, यह part AB इस साइकिल का ABCA का part AB आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर P पर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी हो, तो वर्क डन इन द आइसोबारिक प्रोसेस इज P मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, एंड वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, सो P into at constant pressure we can write P into delta V is equal to nR, n small n capital R into delta T. P delta V is equal to nR delta T. So work done along path AB is nR into delta T, while delta T where delta T is change in temperature, plus WBC हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, प्लस WCA, C से A के लॉन्ग वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर यहाँ चेंज होता है 500 केल्विन टू 300 केल्विन, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस पार्ट इस साइक्लिक प्रोसेस ABCA का पार्ट CA और पार्ट CA के लॉन्ग, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है, टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन चेंज इन वॉल्यूम क्या है, 0 है, इसलिए वर्क डन बाय द गैस in this part CA will be equal to 0, so WCA is equal to 0. Now we have WBC, इसलिए therefore WBC equals to minus 1200 minus NR into delta T minus NR, N का वैल्यू 2 मोल है, R का वैल्यू 8.31, एंड चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है 500 केल्विन माइनस 300 केल्विन, दैट इज 200 केल्विन का चेंज है, so it is 200. Therefore we have minus 1200 minus 8.31 multiplied by 200 is change in temperature delta T, in place of delta T we have written 200, तो 200 का 20 से दो प्लेस पर डिसिमल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दैट इज 8.31 is 831 by 100, so it is now 2 into 2, in second term it is 2 into 2, that is 4 multiplied by 831, 4 multiplied by 831 is 3324, so 3324, that is minus 1200 minus 3324, and it is minus 4524 joule, it is minus 4524 joule answer. So work done along the curve path or part BC of the loop of the closed path or the closed loop is WBC equals to minus 4524 joule. Now problem 18, figure 26 E10 shows the variation in the internal energy capital U taken along y-axis with the volume V taken along x-axis of 2.0 mole of an ideal gas in a cyclic process ABCD. The temperature of the gas at points B and C are 500 Kelvin and 300 Kelvin respectively. Calculate the total heat absorbed by the gas during the process.
इस साइक्लिक प्रोसेस में गैस के द्वारा टोटल हीट कितना एब्जॉर्ब होगा उसे कैलकुलेट करना है, उसे फाइंड करना है। गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ an ideal gas is 2.0, n equals to small n equals to 2.0 mole, that is 2 mole. पॉइंट बी का टेम्परेचर 500 केल्विन है, सपोज इट इज T1 के, एंड पॉइंट सी का टेम्परेचर 300 के है, सपोज इट इज T2. So total heat absorbed by the gas during the process using first law of thermodynamics, delta Q, total heat absorbed by the gas in this cyclic process A, B, C, D, A. We know that change in internal energy of an ideal gas during the cyclic process is 0. So delta Q is equal to delta U plus delta W. But delta U, change in internal energy of the gas in a cyclic process or in the cyclic process is 0. So it is delta Q is equal to work done, total work done, delta W. Delta U is equal to 0. And total work done in this cyclic process is work done along AB, path AB, plus work done along path BC, plus work done along path CD, plus work done along path DA. और delta Q equals to delta W, that is total work done in the cyclic process. WAB, work done along AB at constant temperature 500 K, is an isothermal process. So work done in during an isothermal process is nRT log base E V2 upon V1, where V2 is the final volume, V1 is the initial volume. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है 500 केल्विन, एंड गैस का वॉल्यूम V0 से इंक्रीज होकर के 2V0 होता है. सो यूजिंग दैट फॉर्मूला, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग the isothermal process is nRT log base E V2 by V1. So n equals to 2 mole, R, capital R is 8.31, multiplied by temperature is 500 Kelvin. So it is 500 K log into log base E V2. ए से पॉइंट बी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम को सपोज किया गया है. तो इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम गैस का V0 है, ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 2V0 है. सो लॉग बेस ई V2 by V1, V2 मीन्स फाइनल वॉल्यूम 2V0 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम V1 इज V0. So this is work done along path AB, which is at constant temperature 500 Kelvin. So it is an isothermal process. Plus work done along BC. Work done along BC at constant volume 2V0. So this is 0. Since change in volume along path BC is 0. क्योंकि BC path के along जो work done होगा वह constant volume 2V0 पर परफॉर्म होगा, इसलिए change in volume 0 है. So using the formula, work done at constant, work done is given by since change in volume is 0, therefore work done at constant pressure P, we know P into delta V is equal to 0. There delta V is equal to 0. So work done along path BC is 0, plus work done along path CD, that is at constant temperature. It is again at constant temperature 300 Kelvin. So it is also an isothermal process. So using the same formula, that is work done during an isothermal process, W equals to nRT log base E V2 by V1. आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला यूज करने पर
वर्क डन अलोंग CD कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन पर होगा, परफॉर्म होगा, इसलिए यह भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। सो इट इज N दैट इज 2, N की जगह रिप्लेस करते हैं 2 मोल, R की जगह 8.31, 8.3 भी रखा जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ 8.31 कैपिटल R का वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर यहाँ है C पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, और वह टेम्परेचर C से D तक कांस्टेंट रहता है 300 केल्विन। सो इट इज 300 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई log base E. Now V2, now final volume from C to D is V0. At corresponding to point D, volume of the gas is V0. D point के corresponding जो वॉल्यूम है वह V0 है, एंड विच इज फाइनल वॉल्यूम C to D during the change from C to isothermal, change from C to isothermal process, or isothermal change from C to D. Volume is final volume is V0, initial volume is 2 V0. So it is V2 by V1. So V2 is V0 upon V1 is 2 V0. V0 दोनों टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, प्लस in last step work done along DA, it is also at constant volume V0, so change in volume is 0, therefore work done along path DA is 0, so WDA is equal to 0. Now we have 2 multiplied by 8.31 multiplied by log, फर्स्ट टर्म में log बेस E 2 है, सेकेंड टर्म में log बेस E 1/2 है, तो log बेस एक्सपोनेंशियल 1/2 को हम लिख सकते हैं -2 log E. सो log बेस E 2 दोनों टर्म में कैंसिल हो जाएगा, और इट इज 2 into 8.31 मल्टीप्लाइड बाई log बेस E 2 अंडर ब्रैकेट 500, फर्स्ट टर्म में टेम्परेचर 500 है, सेकेंड टर्म में 300 है, प्लस साइन बीच में है, लेकिन log बेस E 1/2 इज कैन बी रिटन एज माइनस log बेस E 2. सो log बेस E 2 is taken out of the bracket, so it is minus 300, second term is now negative, and it is now 2 multiplied by 8.31 multiplied by the value of log 2 base exponential, that is natural log 2 base E is 0.693 multiplied by 500 minus 300 is 200, and after multiplication we can obtain the value of delta Q, that is heat absorbed by the gas during this cyclic process ABCDA. After multiplication we can find the result, which is delta Q equals to 2303.532, that is 2303, that is 2303 joule. Answer 2.303 joule, sorry 2303 joule, 2303 joule answer. That is heat absorbed by the system. System means gas during the cyclic process ABCDA, which is represented in this internal energy volume graph or diagram, that is UV diagram.